जय बाबा। आज हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे सेंटर की 64वीं सालगिरह है। 62वीं सालगिरह है। 1964 को इस का सेंटर का उद्घाटन हुआ था। इसी अवसर पर हम आज बहुत उत्साह से और बहुत खुशी से आज हम हमारा 62वां वर्धापन दिन यहाँ मना रहे हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर जो दीप प्रज्वलन है वो करने जा रहे हैं। तो जोरदार एक बार तालियां हो जाए ताकि सब में ऊर्जा उत्पन्न हो जाए। जय बाबा। मैं श्री टेड जी और वॉटसन जी को आमंत्रित करती हूँ और उसका भालेकर आंटी को उनको दीप प्रज्वलन करने के लिए बुलाती हूँ। मिसेस वासुस मैडम, डॉक्टर वासुस, मिसेस कासार काका, there you have to go. पार्थ सारथी आंटी, कासार काका, डॉक्टर वासु, डॉक्टर वासु, त्यांचे मिसेस अंकल वासु अंकल, प्लीज यू ऑल्सो जॉइन विद them. ये जो हमारा जो सभागृह है ये पूर्णतः बाबा के पूरे ही रंग में रंगा हुआ है। और इस रंग को और रंग चढ़ाने के लिए हमारे जो तो टेड एंड वॉटसन आए हैं वो बहुत खूबी और भी रंग उसमें बढ़ाएंगे। हर बार जब दीप प्रज्वलन होगा तो एक बार बाबा का नाम का जय घोष करेंगे हम सब। मेहर बाबा की जय। बोला अवतार मेहर बाबा की जय। 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 को कहती हूँ कि सूत्र शुरू करें। उसके बाद स्वागत गीत के लिए सभी तैयार हो जाइए। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, परब्रह्म अधिकारी, कण कण में तुम रमे हो जग के, त्रिभुवन के रखवारी। तुम बिना अब तो रहा न जाए, भक्तन के हितकारी। मेहर प्रभु जी दीन दयाला,
युग युग के अवतारे, वास तुम्हारा होय भजन में, वास तुम्हारा होय भजन में, भजन रंग भर माय, प्रेमी जन चित चकोर बनकर, रस अमृत पी जाए। एक मिनट, एक मिनट।
अरे बाप रे. आपल्या मुख्य करण्यापूर्वी थोडंसं अरे बाप रे. एक बोर्ड कंपनीचे एक प्रोफेसर आहे. पण त्याच्या आधी एक दोन गोष्टी तुम्हाला सांगू इच्छितो. एक वर्ष आणि एप्रिल मे हे 2 महिने हे आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे. एक कारण म्हणजे अर्थातच आपल्या सेंटरचं नाव असेल. काय करायचं ते कर. वर्षगांठ मना रहे हैं सेंटर की. तो ये अपने आप में एवढं बहुत बड़ी बात है उसके लिए. दुसरा गोष्ट आहे की कॅबिन फॉर्म वाचलं असेल त्याच्यामध्ये की बाबा कैसे किया ये नहीं इससे जा रहा पण बाबा ज्या फार सुंदर की एक इन्फिनिट अपार प्रज्ञ आणि टिफिन लेक्चर्स की बाबा त्याचा संदर्भ टिफिन लेक्चर्स मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. या दोन्ही गोष्टींची सुरुवात 3 एप्रिल मे महिन्याबरोबर जवळजवळ 1919 साली. आता त्याला किती वर्ष होतं? 100 वर्षाची शताब्दी आपण त्याची साजरी करत आहोत. त्यामुळे हा दुसरा महत्वाचा युग आणि तिसरा युग म्हणजे कर रहे हैं, उसकी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. सो ये 3 कारण हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम और ये अप्रैल मई के जो महीने हैं ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं. और एक महत्व की बात यह है कि हमारे ट्रस्टीज ने ये तय किया है कि जिस प्रकार आज टेड और वार्ड पार्क्स को बुलाया गया है आज के मुख्य कार्यक्रम के लिए, तो उनको तो हम उनका सत्कार तो करेंगे, लेकिन इसके साथ 2 अन्य मुख्य व्यक्ति जो हमारे सेंटर के साथ यहां से काफी दूर है फिर भी अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं. एक तो है हमारे कासार काका जिनके बारे में मेरे पिताजी अभी बताएंगे. दूसरे है हमारे डॉक्टर वासु जिनके बारे में भी हमारे पिताजी आपको बताएंगे. लेकिन मैं इन दोनों का स्वागत करता हूं. उसके साथ में डॉक्टर वसु के साथ में उनकी एक रिश्तेदार कहिए और उनकी धर्मपत्नी, ये दोनों स्त्रियां यहाँ पे आए हैं. हम उनका भी स्वागत करते हैं. और मैं पिताजी से कहता हूं कि अभी इन 4 अतिथियों का वो यहाँ परिचय करवाए और हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे मौजूद हैं जिनके हाथों हम इन लोगों का सत्कार करेंगे. जय बाबा.
अवतार मेहर बाबा की जय। आज मैं कुछ अंग्रेजी और कुछ हिंदी बात करूंगा। आई रियली फील प्रिविलेज्ड टू फेलिसिटेट all these people, especially Ted, for a long time desire that you should come and we should felicitate you. And I'm very much thankful to Ward Parks. He has come along with him. And एक दो बात मैं इनसे इनको अंग्रेजी में कहना चाहूँगा, फिर बाद में हम हिंदी में बात करेंगे। I was traveling in US. The first time I was invited for the LA service program, and on my request, they they took me to Myrtle Beach. And when I was sitting at Village, a lady was sitting a little away from me with table in front of her, and she was sitting on a chair. Another lady who was attending to us, she took me to that lady and she said that she is the sister of Ted. I was so excited to hear that, and I had about 15-20 minutes with her. One important thing which she told me is about you. She told me that Ted is she has very strong willpower. Once he decides to do something, he will complete it. He will not sit quiet unless he complete it. That is the quality, he said. And while expressing that, I could see a sort of a pride on her face. I really enjoyed that. I told you specifically because बाद में मैं हिंदी में बात करूंगा इसके बारे में. And one another very touching story which I remember about Ted is quite some time when I was the secretary of Poona Center, and I used to go to Meramand one, twice, one in 3 months, 2 months, 3 months. And on one of such visits, I went to Samadhi. It was round about 10 o'clock. And I sat for some time. They were alive in those days. I sat for about 15-20 minutes inside and then came out and sat on the bench. And the whole Mandali of Merazat, Lady Mandali, they came there. It was their practice to have a visit once in a month. The whole Mera and Mani and everybody, they used to come there and they used to spend about more than half an hour in Samadhi, praying to Baba. And the whole family, ladies family, Lady Mandali, they came there. And they straight away went inside. Inside, they spent about little more than half an hour. And then when they came out, Meera noticed that I was sitting there. And she asked me, Pratap, will you sing couple of bhajans? And I very willingly, I took out the harmonium and sang two bhajans as per her desire. And then after she, they were closing eyes and listened to the bhajan. When they were preparing to go away, I knew that they will first go to Mansari and therefrom they will go into the car. So I just got up, stood before near this the stretcher room just to
say goodbye to Mera. And the whole Mandali, they came led by Mera. And I just folded my hands. She just smiled at me and went ahead. After she went about 10 steps, she came back. She stood right in front of me and just told me, Pratap, the style you see, you people sing, Madhusudan, all your party members, Baba used to like that style very much. Baba used to like that style in which you people sing. Baba used to like very much. And further, she said that Baba would have liked singing of Ted also. Very touching memory. I wanted you to know about it. I am going to tell these people how you have involved yourself in some difficulties we had. I am going to experiment with the people in Hindi. I also am going to tell them about your involvement during the demolition of the ward in Sassoon Hospital. And I'm also going to tell the people in Hindi about some other incidents. So this will be my talk in Hindi. क्या हुआ कि जो लोग अंग्रेजी समझते नहीं उनके लिए मैं बताऊंगा कि मैं एक बार अमेरिका गया था और अमेरिका में कुछ दूरी पर एक जगह में बैठा था मटल बीच में। तो दूरी पर एक महिला बैठी थी और जो हमको अटेंड करने वाली महिला थी वो मुझे लेकर वो महिला के पास लेकर गई और उसने मुझे कहा कि ये टेड की बहन है। ये जब मैंने सुना तो मेरे अंतःकरण में एकदम उत्तेजना पैदा हुई। मैं वहाँ पर बैठा और उसके साथ में बातचीत किया तो उसने एक खासियत टेड की मुझे बताई कि टेड ने एखादी चीज अगर मन में ठान ली तो इतने इतने ड्यूट इतने इतने पक्के विश्वास से वो उसको पूरे करेगा रुकता नहीं था। ये उसकी खासियत है। उसकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है इसके बारे में। और फिर उसने बताया कि इसका भारत पे जाना इसके पीछे भी यही स्ट्रांग विल है उसकी। इसने एक बार ठान लिया कि भारत में जाकर सेटल होना, ये वहाँ पर सेटल हुआ। ऐसे ही ये टेड के बारे में उनके बताया, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बता सका मैं उनके चेहरे पर एक गर्व की बात थी, अभिमान था। मुझे अच्छा लगा उसका बात करने के लिए। दूसरी बात मैंने उनको बताया कि एक बार मैं समाधि पर बैठा था और सारी मंडली वहाँ पर दर्शन के लिए आए थे। बाबा की मेरा जात की लेडीज मंडली और आरती बराबर वो सब 1 महीने में एक बार उनका ये कार्यक्रम रहता था कि सारी महाराज की मंडली वहाँ पर आके बाबा के साथ समय बिताती थी। तो ये मंडली आने के बाद सीधे अंदर जब मैं बाहर बाकड़े पर बैठा था, ये अंदर जाने के बाद उन्होंने लगभग आधा पौना घंटा अंदर बिताया और फिर बाद में बाहर आने के बाद जब मेरे साथ मेरे तरफ देखा तो उसने मुझे कहा कि आप 1-2 भजन गाइए। तो मैंने हारमोनियम निकाल के उनको 2 भजन सुनाए। पूरे भजन सुनने तक वो आंखें बंद करके सुन रही थी और फिर वो जाने की जब निकलने वाली थी तो मुझे मालूम था कि पहले मंसारी के घर पर जाएगी। तो मैं जो स्ट्रेचर रूम जो है वहाँ पर खड़ा रहा कि ताकि आखिरी उनको नमस्कार करूँ। ये सब उनका सब हो निपटने के बाद वो लोग जब निकले तो मेरा सामने थी और उसके बाद में आसपास में सब लेडीज मंडली थी। और जब
मेरे से सामने से गुजरे तो मैंने झुककर उनको प्रणाम किया। वो कि मेरे तरफ देख के वो हंसी थोड़ा और आगे चली गई। आगे 10 कदम जाने के बाद वो टर्न करके फिर से मेरे पास आ गई और मुझे उन्होंने कहा कि प्रताप, तुम लोगों की जो स्टाइल है गाने की, वो स्टाइल बाबा को बहुत पसंद थी। बाबा को, क्योंकि बाबा की भी गाने की स्टाइल ऐसी थी, जब बाबा गाना गाते थे बाबा की भी स्टाइल अच्छी थी। और ये मधुसूदन और तुम्हारे सब जो ग्रुप गाता है, वो स्टाइल बाबा को पसंद है। और इसके बाद में एक बात उसने जो कही, वो बिल्कुल दिल को छूने वाली थी। उन्हें कहा कि अगर बाबा टेन का गाना अगर सुनते तो उनको वो बहुत पसंद आता था। ये इसलिए मैंने टेड को अंग्रेजी में बताया। बहुत भावुक होने की बात है। इसके बाद में एक बार, आप जानती हैं कि हमारे नरेंद्र ठाड़ी, उन्होंने ये स्टेज जो है ये बड़ा बनाने के लिए कुछ स्टैंड्स बनाए थे, लोहे के स्टैंड बनाए थे और उस पर जंगली लकड़ी के फलियां डाली थी। और वो यहाँ पर लगा के हम लोग स्टेज को बर्थडे कार्यक्रम के लिए बड़ा करते थे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग डांस किया करते थे। ऐसी 1-2 साल उन्होंने बना के लिया और वो हम लोग रचने यहाँ के रचकर उसका इस्तेमाल करते थे। वो 2 साल ठीक चला, लेकिन बाद में वो जंगली लकड़ी की थी ऊपर ऊपर वाली, वो सब आड़ी टेढ़ी होने लगी। 1 साल में हमारे बच्चे लोग, लड़कियां जब नाच कर रही थी तो एक लड़की गिर गई वहां से और एक का पैर पैर में मोच आ गई और ये हमारे लिए कोई चिंता की बात हो गई। तो एक बार टेड हमारे पास आए थे यहाँ पर, तो उनको मैंने बताया कि हमारा प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है और हम ये स्टेज का कुछ करना चाहते। तो टेज ने कहा कि ये इसको बढ़ाते क्यों नहीं। मैंने कहा ये बढ़ाए तो हमारी जगह कम हो जाएगी हॉल की, तो हम ऐसे ही चाहते कि ऐसे टेबल बना के मिले तो अच्छा है। तो टेड ने वो जिम्मेदार अपने ऊपर लिए। उन्हें हम कहा कि मैं ये मेराबाद जाऊंगा और वहाँ के मेरे पहचान वाले सुतार के पास से मैं बना के लूँगा। और फिर उन्होंने यहाँ से माप लिए और माप लेने के बाद में वो वापस चले गए। वो अपने अपने काम से आए थे। वापस चले जाने के बाद में 1 महीने के बाद में उनका वो सब टेबल तैयार होने के बाद उन्हें पहले तो हमारे पास 3 कोटेशन भेजे। अब कोटेशन अपने दिल से भेजे कि उनको प्रैक्टिस हो गई थी भारतीय रूल्स एंड रेगुलेशंस कही कि देख, बड़े अमाउंट का अगर कोई ये करना हो तो कम से कम 3 कोटेशन तो हमारे पास आ जाए। अपने दिल से उन्होंने 3 कोटेशन भेजे हमारे रिकॉर्ड के लिए और काम शुरू किया वहाँ पर। वो काम पूरा होने के बाद में वहाँ से ट्रक में डालकर ये खुद ट्रक में बैठ कर यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद में उसको टेलीफोन किया और ये अपना जो ये पुलिस चौकी का गली है, वहाँ पर ट्रक को खड़ा किया और वहाँ से ये अपने हाथ गाड़ी से सब वो यहाँ पर लाने की यहाँ पर लाकर रखी। और फिर टेड की ताकत के वो छोटे जो जो वो अकेला उठाता था ऐसा था। लीव अलोन। माय गॉड, आई वाज सरप्राइज। इधर लाके रखे, इधर करके कैसे उसको अरेंज कर रहा है उसको मुझे बताया और फिर वो वापस चले गए। दूसरी इनकी यादगार मैं बताऊंगा। ये ससुन हॉस्पिटल के जो रूम तोड़ने वाले थे, जिस जिस रूम में बाबा का जन्म हुआ था, तो वो सब बिल्डिंग ही तोड़ने वाले थे। तो इन्होंने ये सुबह ही ससुन हॉस्पिटल के पास में ये हाजिर हो गए और मैं यहाँ से वहाँ गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि टेढ़ बहाना आने वाले हैं। वहाँ पर आने के बाद में पहले तो उन्होंने, उनके पास जो लंबे लंबे टेप्स थे, वो दीवार से लेकर तो आसपास की दीवार तक
नाप लेके उनके पास नोटिंग रखा उन्होंने। और जब तोड़ने का, उसके तोड़ने के पहले हमने एक बड़ा कार्यक्रम बनाया था, सारे भारत भर के लोग आए थे। तो ये जब उस दिन जब तोड़ने की जा रहे थे, तो टेढ़ अंदर था उनके साथ में, और दरवाजे जो है चौकड़ी के साथ, वो बड़े हिफाजत से उन्होंने निकाल कर अपने ताबे में लिए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ ऐसी बात किए थे, अपने ताबे में लेकर वो बाजू में रखी। ये टाइल्स जो है, टाइल्स से क्या कहते, समय भी जो अच्छे टाइल्स है वो निकाल कर उन्हें बाजू रखे, और ये सारा जमा करके ट्रक में डाल के वो लेकर गए। मैंने उनको पूछा इसको क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने तब मुझे बताया कि इसको मैं मेराबाद में हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल करूँगा। लेकिन बाद में जब हमारे सिसुन हॉस्पिटल में जो मेमोरियल रूम बनाया गया, तो उसने ये जो मटेरियल था, विंडोज फ्रेम्स एंड सब, वहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया। और इतना इस्तेमाल किया, उसमें से कुछ टाइल से सब वहाँ पर किया। उसका जो बोर्ड था इसमें मार्बल में बनाया हुआ, वो भी लगाया हुआ था। ये सब एक आदमी ने किया। इसके लिए उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया, हमारे लोगों के सारे एक पैसा भी नहीं लिया। जब वो ये सारा सामान लेकर आए थे, तो उनके साथ मैं ये सामने वाले होटल में गया, उनके सामने मेनू रखा, उन्होंने खाना मंगाया, मैंने भी खाना मंगाया, और जाते समय वो पैसे निकालने के लगे। मैंने उसको हाथ जोड़ा, पेड दिस पेमेंट विल बी मेड बाय यू आर और गेस्ट। और फिर बड़े मुश्किल से मान लिया वो उन्होंने। ऐसे इनके बारे में और एक बात बतानी है मुझे, कि एक बार मुझे लेकर वो ये जो एस्बेस्टॉस के स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो आलंदी के पास में भोसड़ी को जाने के जो रास्ता है वहाँ पर कहीं था। ऐसे बड़े रास्ते के बाजू में उनके बड़े बड़े गोडाउन थे, तो वहाँ पर लेकर गया। वहाँ से एक जगह पर वो एस्बेस्टॉस के रूम्स का मटेरियल था, वो मालिक से बात किया, और अपने गुरु प्रसाद के बाजू में जो रूम बनाई है, वो इनका काम है। इन्होंने वहाँ से जो मटेरियल मंगा के बनाया, इतना सब हमारे लिए उन्होंने किया, लेकिन उसका कहीं बोलबाला नहीं, कहीं नहीं। दूसरे हमारे, आज मैं बड़े खुश हूँ कि आपने इनके साथ आने का तय किया। ये चीज़ जो है कि कि बड़े और सारा कारोबार, सारा संसार जो है मोटरसाइकिल पे रखती हो, और अकेले जाते हैं, जहाँ पर लगाना अकेले उठाते हो, लिफ्ट सिम्स एवरी ऑल दिस बिग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिट्स, जिधर जिधर जाना है अकेला आदमी करता है। मुझे ताजुब होता था कि कैसे आदमी अकेला ये सब करता है, लेकिन उनका वो तरीका था। दूसरी इनकी एक स्पेशलिटी ऐसी थी कि मराठी जो हिंदी जो गाने हैं उनको अंग्रेजी बनाना, और वही तर्ज में, जो हिंदी में तर्ज है वही तर्ज में अंग्रेजी में बनाना। पहला गाना उन्होंने बनाया था कि लेना मेरे काम नहीं, ऐसा कोई महान नहीं जिंदगी में कम। इसका अंग्रेजी में होना उन्हें मरा। एक भारतीय वो हिंदी में गाता और ये अंग्रेजी में गाते थे। और सबसे ज़्यादा फेमस जो हुआ, बाबा हो बाबा हो, बाबा हो का भी जो वर्जे थे उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। ऐसे गुणी व्यक्ति है ये। दीज आर द जेम्स ऑफ मेरे बाबा दरबार। ये आज वी आर रियली प्रिविलेज टू
felicitate you people here. And I'm very personally thankful to you that you are agreed to come and accept your felicitations. हमारे दो और ऐसे व्यक्ति आए हमारे साथ में। एक तो हमारे डॉक्टर साहब है, ये इनके पिताजी से मेरी बड़ी पहचान थी। वेंकैया नाम था ना उनका। तब वो आपका हिसाब नहीं, आप हिसाब में नहीं था हमारे। तो रामकृष्ण के द्वारा उनसे मेरी पहचान हो गई थी। और एक बार हम लोग, मैं रामकृष्ण और होम आई, हम लोग हैदराबाद गए थे। ये कृष्णा नायर था, नहीं कृष्णा यादव, वो हमारे साथ में था। हम लोग पहले कोजागुड़ा में गए। कोजागुड़ा के साथ में हमारे आपका जो रामपली के पास में मकान था नीचे वाला, उस मकान में आपके माता जी ने बड़ा, हम लगभग 12-13 लोग थे, सबका भोजन बनाया था, स्वादिष्ट भोजन। और गपशप लगा के हम लोग ने भोजन किया। तब ये डॉक्टर हमारे हिसाब में नहीं था। बाद में 2007 2006 जब हम लोग ने 50 साल एक्सीडेंट होने के बाद में उड़तारा में जब बड़ा कार्यक्रम लिया था, एक आदमी ने इतनी मदद की है, अपनी इतनी मदद की है कि उसका कुछ हिसाब नहीं। लेकिन इसमें एक बुरी बात है, और बुरी बात ऐसी है कि ना कभी नहीं बोलता ये, जो कुछ प्रश्न बोले हाँ ही बोलेगा ये। नहीं मुझे टाइम नहीं, मुझे ऐसा है, मुझे ये अड़चन है, वो कभी नहीं। मैंने इसके बाद में कई लोगों को वहां पर भेजा, लेकिन इन्होंने कभी भी ना नहीं बोला। ऐसी वक्त शुरू शुरू में इनको ईगो कॉम्प्लेक्स का सामना करना पड़ा था। उसके बारे में मैं नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन बड़ी शांति से उन्हें सब डीलिंग किया। और आज हम बड़े अधिकार से वहां पर जाकर कभी भी खड़े सकते। ये आदमी हर वक्त हमारे मदद के लिए तैयार रहता है। बहुत थैंकफुल है मैं करी। जब तक माता जी जिंदा थी तब तक उड़तारा के समय में जो आरती होती थी वो खुद वहां पर उपस्थित रहती थी, खुद उपस्थित रहती थी। पारिवारिक संबंध थी, पारिवारिक संबंध ये फैमिली से। और अब मैं बात करूंगा साहब आसार, जो इनकी इनमें जो बुरी आदत है उनमें भी वही बुरी आदत है। ना कभी नहीं बोलने का, कोई भी चीज उनके सामने रखो, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, करो करके छोड़ देगा। ऐसी व्यक्ति है ये। तो ये हमको हीरे मिले, हीरे। हम सबको मालूम है लास्ट में हमारे जो पद यात्रा थी, तो ये व्यक्ति ने जो रथ बनाया था, रथ का पूरा खर्चा उसका इन्होंने उठाया था, एक पैसा भी हमसे नहीं लिया था। और मेरी मुझे उन्हें मेरी ये पैरों की हालत देखकर मुझे कभी उन्होंने ग्रुप के साथ सोने नहीं दिया। मेरे लिए सोने की जगह वो अलग से उनके जो नाते गोते जो पहचान वाले थे उनके पास मुझे लेकर जाके रात को मुझको मुकान करने के लिए उन्हें व्यवस्था के, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत आभारी हूँ। केवल इतना ही नहीं है, उनका काम जो पदयात्रा पुरता मर्यादित नहीं है। हमारे केंद्र का जब गोल्डन जुबली हुई थी, सारे भारत भर के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी रहने की जगह हम लोगों को चाहिए थी, जहाँ जहाँ पर ये साथ में हमारे साथ में घूमकर अनेक जगह पर हम लोग ने जगह ले ली थी। एक तो अपना जो जंगली महाराज रोड है वहाँ पर एक था, यहाँ पर कस्बापेट में जगह थी, इनके पर्सनल जो पहचान थी। और ये
गाड़ी महाराज की धर्मशाला थी, सब जगह हमारे साथ में घूमकर ये व्यक्ति ने हमको बहुत बहुत मदद की, बहुत मदद की। ऐसे लोग हैं, आज हमारे सेंटर में बड़े योग्य रीति से उनका सत्कार करने का तय किया है। और मैं भी बोलूँगा कि आगे का कार्यक्रम आप आगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू चेअरमन. ये ना, तू ये ना आधी. आता आपल्या चेअरमन श्री राजीव थाडे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी एकेका व्यक्तीचा, मान्यवरांचा सत्कार करावा. टेड, टेड, कॅन यू प्लीज स्टेप फॉरवर्ड. Dr. Ward Parks, come, please. You have to get up to get something. सांगितलंय राजू. डॉक्टर वासू. आणि कासार काका. तुम्ही नेहमी पांढरे शर्ट घालताय, काय आता कसं व्हायचं? घाला घाला अवश्य. थँक्यू, थँक्यू राजू. ये हमारे मेहर बाबा हैं, ये दिमाग में कुछ न कुछ डाल देते हैं। ये जब आज का कार्यक्रम हो रहा है तो मन में मेरे में विचार आया कि अगर मेराबाद और मेरादाद में जो भी वेस्टर्नर्स रहते हैं उनके लिए एक बस, छोटी बस करके सबको जमा करके ये कासार साहब का जो यहाँ क्या बोलते इसको, हाँ मेरिटेड, वहाँ पर इनको लेकर जाना और वहाँ से फिर नारायण महाराज का जो आश्रम है वहाँ पर बताना उनको। ऐसे मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई, देखे हमारे लोग कहाँ कब ये उसको पूरा करते। हा काका तयारी आहे का? हा, व्हेरी गुड. समरमध्ये नाही, समरमध्ये. हो हो, सांगतो सांगतो. श्योर श्योर. जय बाबा. अभी डॉक्टर वसु बोलना चाहते, एक 5-10 मिनट हमारे साथ. और उससे पहले मैं हमारे सेक्रेटरी डोंगरे साहब को विनती करता हूं कि हमने जो बाहर बाहर मतलब छत के ऊपर जो सोलर सिस्टम बिठाई है, तो उसके बारे में वो हमको जानकारी देना चाहते हैं. जय बाबा. सभी को अपने सेंटर के 62nd एनिवर्सरी की शुभकामनाएं. हमने एक अच्छा उपक्रम किया है बाबा की मर्जी के अनुसार और बाबा के सपोर्ट के साथ. वी हैव इंस्टॉल्ड सोलर पैनल्स 6 किलोवाट का, जिसका जनरेशन हमारे कंजम्पशन से ज़्यादा होगा. और 3 साल में ये सिस्टम, हेलो, 3 साल में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं, 3 साल में इसका खर्चा हम पूरा निकाल लेंगे. और उसके बाद हमारी पेबैक पीरियड 3 साल का है और उसके बाद एनर्जी जो है वो फ्री हो जाएगी. सो ये आप सभी के डोनेशंस के वजह से पॉसिबल हो पाया है. तो आप सबके लिए एक बार तालियां बजाइए प्लीज. अवतार मेहर बाबा की जय. और लास्ट ईयर हमने के रामकृष्णन काका के नाम पे लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था. उस उस लाइब्रेरी का आप भरपूर उपयोग कीजिए. हमने सारी किताबें वहाँ रखी है, आप पढ़ सकते हो. और आज भी वहाँ पे हमने किताबें रखी है फॉर सेल, और कुछ फ्री में भी वहाँ किताबें रखी है, तो आप उसका आनंद लीजिए. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू. या डॉक्टर.
Tar Meher Baba Ki Jai. First time I came to the center on May 1st, 1965. Unfortunately, I could not get the entry. We were all stranded on the road. Only by force, my grandmother could see Baba from the window. Now it is covered with the wooden this thing that was open that time. So through that, my grandmother, my father's mother could see Baba. I entered these premises in 1969, second time, last darshan, बाद में बहुत दफा आए, जय बाबा. Main my purpose of talking is about the Satara project, Udtara, with the help of Poona group, Nagar group, and few Mumbai group. We are moving forward. Several plans were submitted, several rejected. Finally, we got fencing done few months back, and just 15 days back, we got a marker pipe planted at the exact spot where Baba accident has happened. That is with the permission of the Chairman, National Highway Authority of India. Next thing what I am going to do is that I am going to have 4 containers, 2 containers of 20 into 8, 2 containers of 40 into 8. One container will act as a residence for any new employee or driver who can show around, who will stay there. And second 20 into 8 will be an office where audiovisual, movie facilities, and there will be spiral message cards of Baba. दूसरे 14 to 8, they will be there for residence, 4 women, 4 men, with toilet, bathroom, kitchen, and a hall for gathering. This is the immediate project which I am going to start in another fortnight. So your all help is required. Prashant has all the information. He has been in touch. Many people are not aware of many things. The land was purchased in 2005 and it was being cultivated by the original farmers. Only just this year we succeeded in stopping their cultivation and we are in full possession. We would like to have at least once in a month or once in 2 months a bhajan program so that we should involve more people from neighboring villagers, and also on record uh, it should be maintained on our name. There should be some activity going on there. As you know, Government of India has certain rules where the land goes back to the tiller. However, uh, your papers are pakka, the land does not remain with you. It goes back to the tiller, whoever is doing that. So as it is, we have spent a lot of time. So we need to do activity there. And first activity we are doing now is on May 24th, commemorating the first accident at Oklahoma, 1952. We are going to have a bhajan and Naam Jap program from 4 to 10. Vilas and Prashant are going to coordinate and the chairman. So I request Poona Center all people to visit more frequently, attend more frequently, conduct more frequently, more programs. Jai Baba. Thank you, Doctor. We assure you from the Pune Center. अभी हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, मुख्य कार्यक्रम.
थोड़ी देर हो चुकी है, तो हो सकता है कि हमारा जो क्लोजिंग टाइम है उसको हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े। आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं अभी टेड को कहता हूं कि टेड, कैन यू प्लीज स्टार्ट विथ योर टॉक। ऐसा सोचा है कि अभी टेड बात करेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे करीबन एक 25-30 मिनट। तो उसका एक तजुर्बा जो है, उसका एक थोड़ा सा अनुवाद मैं आपको हिंदी या मराठी में बता दूंगा, और उसके बाद में फिर टेड गाना गाना चाहते हैं। आपल्या शोभात्याने एक मेसेज पाठवलेला आहे. जय बाबा, सेंटरला येण्याची इच्छा असूनही शरीर प्रकृतीमुळे येता येत नाही. दुःख वाटते. त्यांच्या छत्राखाली, म्हणजे रामकृष्ण यांच्या छत्राखाली सेंटरचे खूप काम झाले. ते आपल्यासाठी आदरणीय पित्यासमान होते. प्रेमळ आणि शिस्तप्रिय होते. त्यांच्या आजारपणात मला त्यांची जी काही सेवा करता आली त्याबद्दल मला धन्य वाटते. जय बाबा, जय बाबा. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द सॉन्ग. आज पहले हम एक टेढ़ यहाँ पे गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसके बाद में वो अपना भाषण देंगे. So, yeah, just to warm up, Ward and I are going to do Ocean of Love, and then I'm going to talk for a while, try to briefly tell you what my life is like at Mehrabad and how I ended up there. I was going to start off leading with the chorus. Yeah. You can sing along with me. I think that most of you know this song. Okay. Are you ready? I am the ocean where all have begun. I am beloved sublime. I am the ocean where all finally come. I am the one beyond time. I am the one beyond time. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of limitless joy, infinite consciousness too. I am the music that never will cloy. I am the ocean in you. I am the ocean in you. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of unending peace, infinite hearing and sight. You from your chains I have come to release into my ocean of light, into my ocean of light. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above.
I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of unbroken calm. Infinite bliss I am too. I've been called Jesus, Buddha, and Ram, and now Meher Baba by you. And now Meher Baba by you. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of love. Drown in my ocean of love. Very. Ward's coming back when I'm finished talking, and we'll sing a few more songs. And then, if there are questions, I'll be very happy to try to answer them. So, this is kind of my story in brief. By now, you know my name is Ted Judson. This is actually my 50th year of living at Maribah. I arrived here in February 1976 to live here, and thank Baba I've been able to stay. I was born in the United States. My father was an accountant, and we lived a normal middle-class American life. My father worked very hard and sent me to some good schools to become an architect. But immediately after graduating from architecture school, I was given a very wonderful opportunity to design houses for a very wealthy person who gave me complete freedom to design these buildings, which is something an architect dreams of being able to do and rarely gets the opportunity. But I somehow was given that opportunity, and it was a good experience for me. I learned a lot, but I also realized this was not the life that I really needed to live. So my dream came true from the beginning, and then I realized this is actually not what I should be doing. You think that'd be better? Yeah. Okay. Plug me in. Stick that here. Yep. Just you're going to change it. Oh, okay. Yes. All right. Keep this in. Yeah. At this time in America, young people were discovering Indian philosophy. There are a number of Indian gurus and Western philosophers who would talk about that the world was an illusion, that it was actually a dream, and that once one became enlightened, they would know the truth.
And for some reason, I really wanted that to happen to me. I was not capable of meditating or doing the kind of mental things that seem to be required to become enlightened. But being stubborn, as my sister told Pratap, uh, I knew I could stop eating. I could make myself do that. And I was also quite impatient. So I decided I would stop eating and, until I either starved or became enlightened. That was my plan. So I wrapped up the things I was supposed to be doing, and I got on the highway. In those days, you could put your thumb out and cars would stop and you could get rides with people. So my first step and put my thumb out, a car came by and pulled up in front of me, and it had Mayor Baba's photo pasted to the window, the side window, facing out. So Baba's photo went boom, and stopped right in front of me as I was about to take this crazy journey of fasting and starving and all that stuff. And this person was going to New York to a Baba meeting. So I went to the meeting and I heard about Mayor Baba. I wasn't able to grasp who he was, but I liked the people. They were from all walks of life, old people, young people, working people, big businessmen, everything. And I also got a ride down to the state of Florida, where the climate is always warm, and I knew I could just sit there in the forest and hopefully become enlightened. But they also said, on your way, go to Myrtle Beach, and to where Mayor Baba has a center at Myrtle Beach. And okay, so I said, sure. So this was in 1972. So I went to the center and I had an experience there that just changed everything. I was on a tour of Baba's house and they were telling me about Baba. And in the one room, there was a ping pong table. And they described how Baba would play ping pong. Baba, if they was playing a little child, the ball would always hit the child's racket and come back. And so on. That's how the child had a wonderful time playing with Baba. But if the guy was a competitor and wanted to win, he'd get a real tough game. And I watched this in my mind happening, and I realized that Baba existed. He was, as I say, he was alive. The only difference is you couldn't see him. And then I also remembered that when I was a child, I was asked to pray. I was brought up in a Christian church, and they would encourage us to pray to Jesus. And so when I would do that, it felt like I actually was talking to Jesus, that he was listening, that he was there. I just couldn't see him with my eyes. And then I said, wait a minute,
the same thing. I'm experiencing the same thing. Baba is real. He's alive, just as if you all are alive. And I can have his company. I can talk to him in a way. And of course, he had been with me ever since I was a little kid. So at that time, I still went through this fasting and stuff, but I realized I didn't really have to do that. And I really didn't have to become enlightened. All I really needed to do was to live this uh, with Baba, with his company, and live in a way that he liked. It would want me to do, and that was really all I had to do. There weren't any fasting or meditation or anything. Just remember his presence and try to behave in a way that he would want you to behave. So I'm still at Myrtle Beach, and I met Lynn and Phyllis Ott. Lynn Ott is the blind painter who painted the murals in the MPC, and he met Mayor Baba, and he asked Baba, I earn a living as a painter, but I'm going blind. How am I going to support my family? And Baba said, you will go blind, but you'll still be able to paint me. And even though he was, those paintings, if you've been to the Pilgrim Center, many of you have, and you can still go there anytime you go to Mehrabad and see these paintings. And they were painted when he was blind. So Lynn Ott, I became friends with Lynn, and he told me about this James Cox who was raising money to build a pilgrim center at Mehrabad, because at that time there were a few little rooms for pilgrims, but there was no major accommodation. And James was looking for an architect who would design the building. And I got a call from Lynn saying, would I do it? And I said, yes. I don't know what made me say yes, but at the time, I just thought I'd design a building and then go back to my ordinary life. But so James said, come to India with me and see the site and meet the people and so on. So I did. My idea was to just take notes and go back and design a building. But Baba's Mandali were very hesitant to let some young American ignorant person, even though I knew architecture, I didn't know anything about Mayor Baba. I didn't know anything about India. Design a building for Mehrabad. So they borrowed some drawing tools and some paper and told me, sit in Pendu's room at Mehrabad and design the building. Don't go home and do it on your own. You're doing it, do it in front of us. So that's what I did. I spent 6 weeks and I would bicycle in and show them what I was doing. And I immediately fell in love with Mehrabad. I immediately liked the buildings at Mehrabad, the old bungalow, the thing. And I also
really like this building that Padre had built for a kitchen for pilgrims. And he had brick arches, and it was all done by village craftsmen, the carpenter and mason from Arangao. They did it all, and they did it without electricity, and they did it with just local material. And I just loved that building. So the Pilgrimage Center turned out to be just a big version of that building. Uh, and I would cycle in and show the Mondley my drawings, and they were immediately very happy that I wasn't going to do some modern, you know, impossible to build thing here in Arrangown. And so we got along very nicely. And I remember taking the drawings to Mara, and then when the day I was leaving, I was called there, and she told me she approved of the design, and then she returned the drawings that I'd given her. And then she looked and said, "Oh, it should be wrapped in a rubber band that'll all come apart," and so on. And so she rushed back into the house and started looking for a rubber band. And I said, "Mara, I can make prints of these. This is nothing. You don't have to worry about that." And she very looked at me and said, "These are not yours. They're Baba's. Take care of them the way you would something of Baba's. They're not yours. You know, I made them, but they weren't mine." So that was a good lesson to start with. Yeah, so let me see what else happened in that time. I spent a lot of time with Padre during that period, and I learned a lot from him. He would, well, first of all, he had built this kitchen, this lovely, or not, dining hall, I guess it was, with the arches and the bricks, exposed brick, and the mangala tiles, and the bamboo chatai, and I really like that. And it clearly invoked memories of Mayor Baba. And I realized that this building should remind people of the buildings that Baba used, that you see in the movies. And because that's what people were there, they were there for Baba. So I went back to the States with these drawings, but I still had no intention of coming back. I built a model, a very detailed model with wooden beams and doors and windows and everything, and I sent them back in a box with Eric and Heather. And the Mundley hired a contractor from Poona to build it. But the contract was just so many square feet of Farsi, so many square feet of plaster, so many cubic feet of concrete, but no real rule to follow the drawings. He didn't actually have to follow the drawings. They were just, and James Cox, he said, "You have to go back. You have to go and supervise. It won't turn out the way you want it unless you go there and supervise." So I agreed. I thought it would take a year. It took 4. But after 4, I didn't want to go home.
I wanted to stay at Mehrabad. And so actually I arrived in February 1976, and now this is 2026. So it's been 50 years since I first arrived. hmm It was Dooney Day, yeah, right. And yeah, and at the time there was no staff quarters or anything there, so that I was put in the Rahuri cabin of all places, and Padre just let you fend for yourself. I had to find a bed, um, bought a mattress and a mosquito net, and put my clothing in the box that the Pilgrim Center model came in, and lived in the Rahuri cabin for, I guess, almost a year. As soon as we had a roof over the Pilgrim Center building, I moved out. But I could have stayed, actually. It, it reminds me of a story. I mean, not a story, but something that happened with Erich. I was a fool to leave the Rahuri cabin, but I didn't feel worthy. I didn't feel I deserved it, and I felt other people were anxious, you know, to have the building back. Which reminds me of something I'd like to tell people about Erich. We would go to the trust office. I would go every Tuesday to the trust office and say hello to the Mandali, maybe have tea with Erich, and so on. And then the Mandali would get back in the car to drive back to Merzad. And Erich would always be the first one in the car. And he wanted to get moving. And then Mani would take her time saying goodbye to everybody, and Erich would be impatient. Sometimes he'd honk the horn. But one time, Erich actually grabbed me by the hand and wouldn't let go. And he started talking to me, and he said, talking very lovingly to me. And then Mani got in the car, and Ranu got in the car, and Balnatu got in the car, and the driver got in the car. And they're all ready to go, but Erich was holding my hand and wouldn't let go, and was being very loving to me. But again, like a fool, I said, I'm keeping all these people up. I don't deserve this. So I let my hand slip out of Erich's hand. And Erich let his hand go like that against the car, like I'd let him down. Because I didn't think I deserved this. Anyway, that's a lesson. None of us deserve it, but we're fools to not accept it. That's all. So let's see. Came to Mehrabad, started the building. Padre would. Here's a story that I'm not Erich, Heather said. Because in those days, Padre was the boss. He was very strict. We wore what we were supposed to wear. We ate what we were supposed to eat. We went where we were supposed to go and when. We got sick. We took his medicine, nobody else's. And
Heather was saying how Padre admired the neem tree so much. And the reason Padre admired the neem tree was because it had this long tap root that can find water and survive in a drought. So neem trees are one of the few trees that can survive in a place like Maribad. So what Padre did with his strictness and his rules and his thing was to make us, I guess, grow deep roots. Because the funny thing is, the five of us who were there, I arrived in February, Eric and Heather arrived in June, and Alan and Janet arrived in November. With the exception of Eric, who of course would still be here, we're still here, all five of us, 50 years later. And I think that was a lot to do with Padres making us something, making us able to do it. Padre would take me to the construction site. He would follow me, not follow me, go with me to the construction site, not to tell me how to do anything, but to show the workers that he had my back, because he had great respect. They had no idea who I was or whether I knew anything. And I didn't speak the language. So it took a lot for the workers to pay attention to me, and Padre helped with that a lot. But he would also ask me questions like, what would I do in this case? And what would I do in this case? And how would I fix this? And he would always say I was wrong. No, won't work. No, you're wrong. No, can't do it. And once we were actually on the roof of the Samadhi. And I don't know if you noticed, there are little windows up in the top there. And in those days, we didn't have any silicones and, sealants and stuff. They would leak every monsoon. So he had me up there and said, now, what would you do with this? How would you fix it? And I said, well, I do this and I do that and I do that. And he'd say, no, won't work. So I got fed up being told I was wrong all the time. So I said to Padre, you just think I'm a fool? He looked me in the eye and said, do you think I'm a fool? yeah, yeah, we're walking back from the Pilgrim Center, and we passed this little falling down tin shed that was being used as a place to make chapatis and little wood firewood storage and so on. It was all rusty and the roof was caving in and all that. And he turned and smiled and looked at me and he said, you're going to think I'm a fool, but I like this building. I really like it. And the funny thing is, I did too. It, it looked, to most people, just say it was useless. It was ugly. You tear it down, put up something that was good. But we never tore it down, and now we've restored it. And it's going to remain there. There's still just a rusty old tin shed, but I don't know. There's one of those things. He thought, modern architect, America, he's going to want something really slick and anyway. Another thing he did that really impressed me was on another walk. He reached down on the ground and pulled up a twig, a piece of wood, little piece of wood.
had fallen off a tree. And he carried it with him. And I assumed he was going to put it in his chula and use it to cook with. But no, he took it to the place where they made bathwater for pilgrims. And he said, he didn't tell me this, but I could see that twig did not belong to him. He had no right to use it in his chula. If he wanted something put in it to use in his chula, he paid for it himself. Or winning. Yeah. Anyway, it's good. Another good lesson. So, like I said, I got back. After 4 years, I didn't want to leave Mehrabad. So I've done a lot of buildings since then. Money was scarce. First thing we built with Padre was a staff quarters. 6 rooms in a row, and we used mud instead of cement. We used mud, bricks, but with mud. And on the 2 end rooms, I put an extra window because there's 3 sides to the room, so we could, instead of just 2, the middle rooms could only have 2 windows, but the end rooms could have 3. So I put 3 on the end rooms. And he came by and he said, why did you do that? I said, well, it's nicer. They get an extra window and take it out. But it'll cost money to take it out. I mean, it's there now. Why not leave it? No, take it out. The people in the middle rooms are going to want those rooms. They're going to be dissatisfied with the rooms that they have. You're just going to create dissatisfaction. Take it out. Yeah. I know. He was right about a lot of things. That building costs 24 rupees a square foot. Mansari was very loving to me and took great care of me. She'd make a tamarind drink for me every morning. She'd even hold up morning arti till I'd finished. And then, because we were the only ones, it was this summer, my first summer, and just she and I there, and we would sit inside the samadhi, and I would play country songs, and she would teach me the artis and ishtiyaki and all that. Those were great days. So this time also coincided with Bao Pelchuri's drive to build the trust so it could be able to handle the future. I mean, he could see the future more than most of us could. He believed what Baba said about millions coming. He could visualize it. So he started this incredible drive to acquire land and to build buildings. So I was his builder. So we built schools, hospitals, staff quarters, the Pilgrim Center, hundreds of toilets and baths for Amartithi. Hostel A, B, and C, yeah, right. And these are all objects that Baba put in his trust deed. And so Bauji was my mentor and my boss.
And I would bicycle in every Tuesday and meet him and tell him what I was doing, get his permission to do the next thing, or get his advice on what to do, so on. He usually had a lot of pilgrims sitting around him. He was giving, entertaining these pilgrims. And when I'd show up, he said, "Look, here he comes. Here comes this man again. He's spending money like a madman. He just expects me to pay these bills. I don't even know what he's spending money on." Look at him, shameless man. And the pilgrim would look at me like that. And it probably happened to you. Yeah, it was. But I went every Tuesday until he died, basically. Even came to Poona to visit him on Tuesday. I became Tuesday Ted. Tuesday Ted was my nickname. So one of the questions of what's my main building project, and it was clearly a memorial tower. And when I first arrived at Mehrabad to do the Pilgrim Center, Erich said to me, "You're going to be very busy now, but do not forget the memorial tower. The memorial tower is the one building that he specified. I mean, he said build facilities, education, medical, and so on. But he said build a tower here." And that was really the only specific building that Baba's was clearly specified. And Eric said, "Don't forget to do that." Of course, nobody really needed it at the time, but I would think about it for years and years and years. And we built the Pilgrim Center, we built the amphitheater, we built Mayor Hospital, Mayor School, hospitals A, B, C, and D, staff quarters, water tanks, toilets, baths. And Eric continued to say, "Don't forget the tower." So when the archive building was done and the Pilgrim Retreat was done, and I'm in my 70s now, well into my 70s, I realized this time was running out and I had to do this. But I couldn't. I could not get it. I built models and sketches and I was close. Even Monty told me I was close. But it wasn't right. I knew it had to do this. I had to do this and this. But how to do that? And I was getting very anxious now that am I going to be able to do this? So Erico, I don't know how many people ever met Erico, but he was a brainy guy from America. And he had a big library in his house. And I was telling Erico my problem. So I said, "Oh, okay," pulled the book off the shelf and showed me this mathematical, three-dimensional mathematical model of what would they called Gabriel's form. I don't know how many people have seen the Memorial Tower, know what it looks like. It's a white marble, horn-shaped structure. Mathematically, it's actually the graph of xy equals 1. It's a simple math formula that causes the curve to rise and go up. And as it goes up at infinity, it becomes nothing. And as it goes down and gets bigger and bigger, at infinity it becomes everything.
So it's a very obvious 3D, three-dimensional shape representing the ohm point. In Christianity, it's the angel Gabriel blows to creation and announces the birth of Christ. In the Quran, they talk about it and call it the trumpet. So that was it. That was what Baba wanted clearly. So I started building it, but I realized I thought I could do it. I mean, I knew I could do it, but I didn't realize how much help I would need doing it. And we this is for anyone who undertakes a Baba project. Don't hesitate to ask the world's greatest expert for help, or the biggest company in Poona to help. You'll be surprised. They might stop work and help you, even though they've never heard of Mayor Baba. And that happened a number of times on this tower. In fact, the marble for the tower was a very complicated shape, curves in all directions. And turned out the only way it could be done is with a computer was required, really. And the only place in Asia that had a computer carving factory that carves marble and stone was in Ahmedabad. So I went there and I met the owner, and the owner said, "Yes, we can do this. It'll cost you," yikes, couldn't possibly afford that kind of money. I don't even remember what it was, but it's just out of this world. We could never raise that kind of money. So went back, tried to find other ways, realized I could not find any other way. So I went back to Ahmedabad and met the owner again. And the first thing he did, came out and gave me a hug. And I said, "Is there any way we could do it cheaper?" And he said, "I have decided I must do this project. What can you afford?" And that's not the only, and he's not a Baba lover. In fact, he's never come to see it. But I've found that don't be shy, don't hesitate to ask anyone you think can help, even if they have never heard of Mayor Baba. You don't have to convince them Mayor Baba's God or anything. Baba will do that, and maybe only temporarily for that person. But if it needs doing, you could find the best people, the best stuff, and he'll make it happen. So that's how that happened. Now I'm managing to stay busy, working on it, restoring buildings and some projects on the hill. But that's kind of 50 years of Maribad. I have no idea how long that took. वंडरफुल। करीबन 25-30 मिनट तक टेड ने बात की है और थोड़ा मुश्किल होगा उसको छोटे समय में, थोड़ी अवधि में आपको समझाना। हम उसके बारे में कभी बात करेंगे, लेकिन आज उन्होंने जो भी कहा है उसके जो मुख्य कुछ बिंदु है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। कितने लोगों को मराठी नहीं समझती? बस मराठी बोलूंगा बट ओके। वैसे आपको बताना चाहता हूं कि 1 मई मतलब आज से हर एक रिक्शा वाला महाराष्ट्र का मराठी में बात करेगा।
आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको मराठी में बात करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा, क्विकली, टेड ने अभी हमको जो बताया, पहले उन्होंने अपने अ, शुरुआती के दिनों के बारे में बताया कि इनका जो परिवार था, ये मध्यम वर्गीय सादा परिवार था। उनके पिताजी अकाउंटेंट थे और उनके माता पिता ने इनको अच्छी शिक्षा देने के लिए काफी मेहनत की है। और वो दिखता भी है क्योंकि टेड बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से वो पास हुए हैं, जैसे कि डार्टमाउथ कॉलेज है, या फिर उनकी जो ग्रेजुएशन आर्किटेक्ट में उन्होंने किया है 1969 में, वो येल यूनिवर्सिटी से किया है। तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से वो अपनी अपनी शिक्षा उन्होंने पूरी की। शिक्षा पूरी होने के बाद में एक बड़ा ही वेल्दी, बहुत ही धनिक एक जोड़ा था अमेरिकन। तो उन्होंने उनको अपने कुछ बंगले बनाने के लिए कहा और बड़ा फ्री हैंड दे दिया, मतलब आप जैसे बनाना चाहते बनाइए। तो टेड के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि इतनी कम उम्र में अगर कोई आपको इस तरह की मोहलत दे कि आप जैसे चाहिए बनाइए, तो उन्होंने जो भी अपनी आइडियाज थी उसके अनुसार उनके लिए इमारतें बनाई। लेकिन उनको उसमें कुछ खोखलापन महसूस हुआ, मतलब बिल्डिंग में नहीं, लेकिन उनके कृति में। और उनको ये लगा कि ये इस तरह से तो चलेगा नहीं, ये तो सब खाली खाली लगता है। और तब उन्होंने कुछ पाश्चिमात्य या भारतीय जो दार्शनिक है, जो तत्ववेत्ता है, उनकी किताबें पढ़ी थी। और उन्होंने ये कहीं पढ़ा था कि सारी दुनिया एक इल्यूजन है, भ्रम है, माया है। और आपको अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको आत्म प्रकाश या एनलाइटनमेंट की जरूरत है। तो ये उनके मन में पूरा बैठ गया था। तो उन्होंने फिर सोचा कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए। तो एनलाइटनमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? तो अभी एक जगह पे बैठ के ध्यान तो करना उनकी प्रवृत्ति में नहीं था, कि उन्होंने सोचा कि ये तो मुझसे नहीं होगा कि एक जगह पे बैठे और ध्यान कर रहा है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने सोची कि मैं ये कर सकता हूं कि मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, कहीं जाके जंगल में बैठ जाऊंगा, खाना पीना छोड़ दूंगा, जब तक मुझे आत्म जागृति नहीं होती। तो फिर उन्होंने तय किया, जगह भी चुन ली। एक फ्लोरिडा में एक जंगल है, वहां जाके बैठने का उन्होंने सोचा, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो ज्यादा ठंडा नहीं होता है। इवन ड्यूरिंग दैट टाइम यू वांटेड टू बी इन अ बेटर क्लाइमेट, ड्यूरिंग योर फास्ट यू वांटेड टू बी इन अ बेटर क्लाइमेट। Yeah, That's why you right. chose Florida. I didn't have to live in a house. I could live in the तो forest. Yeah. उन्होंने फ्लोरिडा चुना था। Yeah. और अब फ्लोरिडा जाने के Yeah. लिए रास्ते पे आए, और जैसे हिच हाइक, अमेरिका में बहुत लोग हिच हाइक करते हैं, यानी आप लिफ्ट मांगते, हम यहाँ पे बोलते हैं। तो उन्होंने जैसे ही अपना अंगूठा उठाया, एक गाड़ी आके उनके सामने रुकी, और जो कांच था जिस जहाँ पे ये खड़े थे, वहां से बाबा उनको देख रहे थे। उस कांच के ऊपर बाबा की तस्वीर थी। तब ये बाबा को नहीं जानते थे अंदर, लेकिन बाबा उनके साथ चल दिए, उनके साथ कि चल भैया तू इनलाइटनमेंट ढूंढने जा रहा है, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। बाद में गाड़ी में बैठ गए, तो वो जो बाबा प्रेमी था, उसने वो न्यूयॉर्क जा रहा था, अब इनको जाना है फ्लोरिडा। लेकिन न्यूयॉर्क उसके साथ इसलिए गए क्योंकि वो आदमी ने बताया कि वहां पे हमारी एक मीटिंग है, उसके बाद में वहां से एक आदमी फ्लोरिडा जाने वाला है, तो आप उसके साथ चले जाइएगा। अब इनको पैसे तो बचाने थे, तो बैठ गया और न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क में बाबा की मीटिंग अटेंड की, उनको काफी अच्छा लगा। लेकिन मन में बहुत प्रश्नों का बवंडर था। लेकिन साथ में उनको ये एहसास हो रहा था कि कोई उनकी रहबरी कर रहा है, कोई उनको मार्गदर्शन कर रहा है, मतलब मन ही मन में। ऐसा नहीं कि कोई आके बात कर रहा है, लेकिन मन ही मन में उनको ऐसे लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि कोई उनका प्रदर्शन कर रहा है। फिर वहां से उनको बताया गया कि आप मर्टल बीच जाइए। अब करने के लिए कुछ नहीं था, तो मर्टल बीच चले गए। मर्टल बीच में जब आप जो लोग मर्टल बीच गए हैं वो जानते हैं कि वहां बाबा हाउस है। उस बाबा हाउस में एक पिंग पोंग टेबल है, अभी वो उन्होंने बाहर रखा है, बाहर मतलब एक बाहर एक गैलरी है, वहां पे रखा हुआ है। तो ये पिंग पोंग पे बाबा पिंग पोंग खेलते थे, और बाबा की खूबी ये थी कि अगर कोई छोटा बच्चा उनके साथ खेल रहा हो, तो बाबा इस तरह से बॉल मारते थे कि वो बच्चा बिना हिले उसके बैट पे बॉल गिरेगी। और अगर कोई मस्ती वाला, मतलब कोई कॉम्पिटिटर अगर बाबा के साथ खेलता था, तो बाबा इतनी तेजी से खेलते थे कि उसके छक्के छूट जाते थे। तो ये बाबा की स्पेशलिटी थी। और ये जब सारी बातें वहां पे बताई जा रही थी और टेड वहां पे खड़े थे,
तो उनको बाबा की उपस्थिति का लिविंग प्रेजेंस, जैसे बाबा दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन बाबा वाकई है, बाबा मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इसका उन्हें बड़ी तीव्रता से एहसास हुआ। तभी वहां पे उनकी मुलाकात हुई लीन ऑट से। लीन ऑट के बारे में हम लोग जानते हैं, जो बाद में अंधे हो गए, बाबा की चित्र निकालते थे। आप अगर पुराने एमपीसी में जाओगे तो वहां पे जो भी आप चित्र देखते हैं मेहर बाबा के, वो लीन ऑट ने अंधे होने के बाद में बनाई गई चित्र है। तो उनसे उनकी अच्छी अच्छी जमी और उनके उनके साथ उन्होंने काफी बातें वगैरह की। बाद में उन्होंने फिर अपना एनलाइटमेंट का कार्यक्रम छोड़ दिया। ये कार्यक्रम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको जो बाबा की उपस्थिति का एहसास हुआ, तभी उनके मन में ये ख्याल आया कि उनको किसी इनलाइटनमेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये जो अवेयरनेस है बाबा की उपस्थिति का, उसको ही अगर वो बढ़ाए, उसको ही अगर वो तरोताजा रखे, तो वो उनके लिए काफी होगा। तो फिर से अपने घर चले गए और एक दिन उनको लिन ऑट का फोन आया और लिन ऑट उनको बोलता है कि ऐसे ऐसी ये मेहराबाद नाम की जगह है, अवतार मेहर बाबा का आश्रम, तो वहां पे उनको एक आर्किटेक्ट की जरूरत है, तो क्या आप जाओगे, आर यू इंटरेस्टेड? तो इनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने कहा कि चलो मैं जाता हूँ। जेम्स कॉक, आपने उनका भी नाम सुना होगा कि जेम्स कॉक्स तब एक आर्किटेक्ट ढूंढ रहे थे एमपीसी, मतलब जो पुराना पिलग्रिम सेंटर है वो बनाने के लिए। अब साहब पहुंच गए वहां पे। वहां पे पहुंचने के बाद में पादरी, जो मेहराबाद के आप कह समझेंगे कि मुखिया थे, तो पादरी ने उनको अपने पंखों के नीचे ले लिया और उनको अनुशासन सिखाना शुरू कर दिया। अब तब ये था कि जो मेहराबाद की जो बाकी जो बिल्डिंगें थी, इमारतें थी, उसका डिजाइन एक टाइप का था। अब मंडली को ये मन में एक 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 डर था कि ये अमेरिका से कोई आर्किटेक्ट आया है, अगर ये अपनी तरफ से अपनी दिमाग से कुछ डिजाइन बना दे जो अपने मेहराबाद के वातावरण से मेल जोल ना खाए, फिट ना हो जाए, तो कैसे होगा। लेकिन टेट की बात ऐसी हुई कि टेट ने वहां पे पादरी ने डिजाइन किया हुआ एक बिल्डिंग देखा था, जो पहले ट्रस्ट ऑफिस था और अभी वहां पे मेरे ख्याल से लाइब्रेरी है। आप भी देखिए, अब बिल्डिंग अभी भी है। तो उसकी जो रचना थी, तो उनको वो काफी पसंद आ गई, क्यों पता नहीं। और उनको दो बातें समझ में आ गई कि अगर यहाँ पे मुझे कुछ काम करना है तो मुझे मॉडर्न डिजाइन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तब वहां पे बिजली आती जाती थी, कुछ बिजली का ठिकाना नहीं था। तो बिजली के ऊपर जो भी काम चलते हैं, जैसे ग्राइंडर है या और कोई मशीन है, तो वो वहां पे चल नहीं सकते थे। दूसरा, उन्होंने देखा कि काम करवाना है तो ये लोकल जो क्राफ्ट्समैन है अरणगांव के, इनसे ये काम करवाना है, जो भी सुतार है, जो भी मेसन है, वो यहीं से आएगा। तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह से यहाँ पे पहले से बिल्डिंग डिजाइन है, उसी प्रकार अगर मैं अच्छी तरह से डिजाइन करूंगा तो अच्छा रहेगा। और फिर उन्होंने ड्राइंग बनाया, मंडली को दिखाया। मंडली बहुत खुश हो गई कि भाई कोई तो है जो जमीन पर है और ऐसे ड्राइंग बनाया है कि जो हमारे जो बाकी बिल्डिंग है उससे मेल जोल खा रहा है। तो उन्होंने सब ड्राइंग अप्रूव किए। जब अमेरिका, अब उनका उनको लगा था कि मैं सब सामान लेके, मेजरमेंट लेके वापिस आऊंगा अमेरिका और वहां पे अपने ड्राइंग्स बनाऊंगा, लेकिन मंडली ने कहा नहीं, वही आपको यहीं बैठ के ड्राइंग बनाने हैं। तो उनको एक ड्राइंग बोर्ड, एक टी स्क्वायर, और वो जो आप में से जो सिविल इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन है उनको पता है, तो उनको दे दिया। पेंडू की रूम दे दी कि यहाँ बैठो, यही काम करो और यही बनाओ और फिर जाओ। तो उन्होंने 6 हफ्ते दिल लगाकर मेहनत की और 6 हफ्तों में उन्होंने ड्राइंग्स बना लिए, अप्रूव हो गए। अब उनको वापस जाना था, तो वापस जाने से पहले मेहरा से मिलने गए और उससे पहले उन्होंने मेहरा के लिए भी वो ड्राइंग भेज दिए थे, लेकिन मेहरा से कोई फीडबैक नहीं आया था। लेकिन जब जाने वाले तो मेहरा ने उन्हें बुलाया, तो मेहरा से मिलने गए। मेहरा ने वो जो रोल था, ड्राइंग्स है तो रोल था, तो वो उनके हाथ में दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, आप आपका ये डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेहरा उनको जब दे रही थी, तो मेहरा ने सोचा कि इसको रबर बैंड, मतलब ये खुल ना जाए, तो वो रबर बैंड ढूंढ रही थी कि इसको रबर बैंड लगाया। तब टेड ने उसे कहा कि भैया रबर बैंड लगाने की जरूरत नहीं है, कि क्यों, मैं कॉपीज तो बना सकता हूं। तब मेहरा ने कहा उनसे कि दीज आर नॉट योर ड्राइंग्स, ये तुम्हारी ड्राइंग्स नहीं है,
ये बाबा की ड्राइंग्स है और इसलिए उनको हिफाजत से रखना और लेके जाना आवश्यक है। और तब ये उनको ये पहली एक सीख थी कि ये बाबा का काम है, उसको उसी हिफाजत से और उसी केयर से करना आवश्यक है। फिर वो चले गए। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, ये रेट कॉन्ट्रैक्ट था। जैसे हम लोग बनाते हैं कि स्क्वायर फीट पेंटिंग का इतना होगा, स्क्वायर फीट कंक्रीटिंग का इतना होगा, ये खुदाई इतनी होगी। खुदाई का एक एक मेजर होता है, ब्रास बोलते हैं उसके, कि इतनी ब्रास मिट्टी निकलेगी तो इतना पैसा मिलेगा। लेकिन वहां कहीं भी ड्राइंग का जिक्र नहीं था कि भैया आपको इस ड्राइंग के अनुसार बनाना है। तो ये तो अस्वस्थ हो गए कि भैया इसमें ड्राइंग का जिक्र नहीं है, ये आदमी कुछ भी बना देगा। तब जेम कॉक्स ने उनसे फिर से फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि अगर तू चाहता है कि तूने बनाए हुए ड्राइंग के अनुसार वहां पे बिल्डिंग बने, तो वहां जा और वहां सुपरवाइज कर। तो ये 1976 फरवरी 12 तारीख को, look at our vision, we knew that you are completely 50 years, therefore we invited you. तो ये योगा योग है एक कि कोइंसिडेंस की उनके 50वीं साल में हमने उनको यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो वो यहाँ पे आए और फिर उन्होंने सुपरविजन चालू कर दिया। रहने के लिए जगह की थी, ये तो अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उनको रहने के लिए जगह दी, राहुरी कैबिन। और फिर पादरी ने कहा कि भैया खाने वाने का खर्चा तो तुमको करना है, हमारे पास और तो कुछ नहीं है, एक बेड है, उसको एक टेबल है, एक टेबल दे दिया और एक बेड दे दिया। फिर उन्होंने गद्दी लाई, मस्कीटो नेट लाया, वो टेबल को कुछ व्हील लगाए और उन्होंने एक मॉडल बना के भेजा था अमेरिका से, पिलग्रिम सेंटर का। जो बक्से में मॉडल भेजा था वही बक्सा उन्होंने अपने कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल किया। इस प्रकार से इनकी जिंदगी मेहराबाद में इतनी चुनौतियों के साथ शुरू हुई। राहुरी कैबिन में करीबन 1 साल रहे और उसके बाद में जैसे ही पिलग्रिम सेंटर थोड़ी उसकी उसमें काम में प्रगति हुई, तो उनके रहने का कहीं और बंदोबस्त किया गया। और पादरी इनके साथ में वो पिलग्रिम सेंटर का काम देखने आते थे, ये करने के लिए नहीं कि भैया इनके ऊपर सुपरविजन किया जाए, लेकिन पादरी ये जताना चाहते थे उन कामगार लोगों को, अरणगांव के जो कामगार वहां पे थे, वो कामगार मतलब मराठीमध्ये नाठाळ शब्द आहे, नाठाळ, तर ते तसल्या प्रकारचे कामगार असतात। तर त्यांना उनको ये मैसेज जाए कि भैया पादरी इनके पीछे है, ये पादरी का आदमी है। और पादरी को बहुत बहुत ही वहां पे इज्जत थी, पादरी से सब लोग डरते थे। तो इस प्रकार उन्होंने पादरी उनके साथ जाते थे। अब पादरी के साथ इनकी काफी बहस भी होती थी और हर एक बार जब ये कोई भी सजेशन देते थे तो पादरी बोलते थे ये चलेगा नहीं, ये दिस विल नॉट वर्क। तो कभी कभी इनको गुस्सा आता था। एक बार ऐसे हुआ कि समाधि के ऊपर लीकेज हो रहा था और पादरी और ये बैठे ऊपर, पादरी ने इनसे पूछा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने अपने दिमाग से उत्तर दिया कुछ, और वो आर्किटेक्चरल कुछ उत्तर होगा। लेकिन पादरी ने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। दूसरी बात बोली, तीसरी बात बोली, हर जो सजेशन देते थे पादरी बोलता था कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये काम नहीं करेगा। तो इनको थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने पादरी से कहा, पादरी डू यू थिंक आई एम अ फूल, तुम क्या समझते हो मैं मूर्ख हूं? तो पादरी ने बड़ी शांत से उनके चेहरे के सामने अपना चेहरा किया और कहा कि डू यू थिंक आई एम अ फूल, क्या तू समझता है कि मैं मूर्ख हूं? तो ये पादरी काका थे। और पादरी काका आप में से जो जो उनको मिले हैं जानते हैं, मैं तो बहुत डरता था उनसे। एक दिन पादरी काका से साथ घूम रहे थे, जो दूसरा सबक उनको सिखाया गया वहां पे, या वो सीखे कि वहां पे एक टहनी पड़ी थी, आप समझते ना, ड्रिफ्ट वुड या जो भी कहा, एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो पादरी काका ने उसे उठाया। अब इन्होंने सोचा कि ये पादरी काका का जो खुद का किचन है, पादरी काका को खुद का किचन था, वो वहां पे चाय वाय बनाते थे, इनको भी चाय पिलाते थे, तो उसमें जाके वो रखेंगे। लेकिन पादरी ने वैसा नहीं किया। पादरी काका ने वो जो लकड़ी का टुकड़ा था, वो पिलग्रिम के यहाँ जो हॉट वाटर बनाते थे, गर्म पानी किया जाता था, वहां पे जाके रखा। और उन्होंने बताया पेड़ को कि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, यहाँ की कोई भी चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, नथिंग बिलोंग्स टू मी। ये जो टुकड़ा है लकड़ी का, ये भी बाबा का है और उनके ही काम में वो जाएगा। अगर मुझे कुछ चाहिए मेरे यूज के लिए, तो मुझे पैसा देके खरीदना पड़ेगा। तो ये है उनको जो मिला हुआ सबक है पादरी से।
और वो कहते हैं कि पादरी की उपस्थिति के कारण, क्योंकि पादरी उनको हमेशा नीम के पेड़ का उदाहरण देते थे। हम बायोलॉजी में सीखे हुए हैं, बॉटनी में, कि देर आर फाइब्रस रूट्स, तंतुमय मूल असतात, कि वो यहाँ वहां फैलते हैं लेकिन उसमें पकड़ने की क्षमता नहीं रखती, और टैप रूट रहते हैं जो गहराई तक जाते हैं और वो पेड़ को पकड़ के रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि पादरी को नीम के पेड़ बहुत पसंद थे, क्योंकि उनके जो रूट्स है वो नीचे तक जाते हैं। और जो हम वहां पे जो पहले 5 लोग आए, हेदर, एरिको, टेड, जैनेट एंड अपना एलन, तो ये लोग उस नीम के पेड़ की तरह वहां पे पकड़ के रखे हैं, और इसलिए 50 साल के बाद भी ये लोग वहां पे कदम लगा के टिके हुए हैं। उन्होंने मेमोरियल के टावर के बारे में बात की कि मेमोरियल टावर जब जब एरेज काका मिलते थे पहले, मतलब 1976 से, उनको याद दिलाते, कहते थे कि बाकी सब काम चलता रहेगा, हॉस्टल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन बाबा ने जो कहा है मेमोरियल टावर वो बनना चाहिए जल्दी। अब इनके बाकी बहुत कुछ काम चल रहे थे तो मेमोरियल टावर की तरफ ध्यान नहीं गया, और जब करने बैठ गए तब तो उनकी उम्र हो चुकी थी, मेरे ख्याल से एरेज ऑल्सो चले गए थे। उनको डिजाइन में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, उनको एक जनरल आइडिया था कि ऐसा ब्रॉड बेस होगा और ऐसा ऊपर टावर ऐसा नैरो होता जाएगा। लेकिन जब उन्होंने ये सब डिजाइन करना देख रहे थे तो उनको कुछ दिमाग में समझ नहीं रहा था, तो एरिको के साथ एक दिन बैठ गए। जो लोग एरिको से मिले हैं जानते हैं कि एरिको बड़ा मैथमेटिशियन था, ही वॉज अ वेरी लर्नेड मैन। तो उसके पास काफी किताबें भी थी, तो वो उठा, एक किताब उठाई, उसमें से एक पन्ना निकाला और बोला दिस इज व्हाट यू वांट। वो है गैब्रियल हॉर्न करके एक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री में, इटी कोई इटालियन मैथमेटिशियन ने उसको डिजाइन किया था। और वो जो है, ये जो बेस है, ये बेस एक इन्फिनिट बेस है, और जो ऊपर है वो जीरो की तरफ, मतलब नथिंगनेस की तरफ जाता है। और एरज को टेड को तब पता चला, मन में ये लगा कि जो बाबा चाहते हैं कि नथिंगनेस एंड नथिंग एंड एवरीथिंग, ये इसका मिलाप ये डिजाइन में है, और यही डिजाइन मेमोरियल टावर के लिए सही रहेगा। तो ये गैब्रियल हॉर्न, आप वहां जाएंगे तो वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, तो वो गैब्रियल हॉर्न के मुताबिक इसको डिजाइन किया गया। लेकिन डिजाइन करने के बाद ये मुसीबत थी कि मार्बल का बनने जा रहा था, और जो बेस में जो मार्बल मार्बल लगे हुए हैं उनको बड़े ही पर्टिकुलरली उसको काटने की जरूरत थी। और ये जो कला है ये भारत में या एशिया में भी ज्यादा प्रचलित नहीं है। अहमदाबाद में कंपनी है जो कंप्यूटर मॉडलिंग करके इसको काट के देती है। तो किसी से उनको पता चला कि अहमदाबाद में कंपनी है, तो चले गए अहमदाबाद। अहमदाबाद में उस ओनर से बात की, उसने कहा हम कर देंगे, ये हो जाएगा ये काम, टिपिकल गुजराती आदमी होगा, हो जाएगा ये काम। जब उसको दाम पूछा तो दाम सुन के इनके होश उड़ गए, क्योंकि उतना पैसा तो ट्रस्ट उनको जिंदगी में देने वाली नहीं थी। तो ये बड़े मायूस हो गए कि यहाँ पे मेरे काम का सोल्यूशन मिल सकता है, लेकिन पैसे की वजह से मैं इनका मतलब इनको ऑर्डर नहीं दे सकता। एक आखिरी कोशिश के के हिसाब से वो ओनर से मिले और उन्होंने कहा कि क्या आप कुछ पैसे कम कर सकते हैं, और उन्हें फिर जो मेयर बाबा के ज्ञान है वो दिया उनको। तब उस ओनर ने उनसे कहा कि टेड साहब, आप चिंता मत करिए, आप जितने पैसे देंगे, आपका जो बजट है उसमें हम ये काम आपको करके देंगे। और इस तरह से ये काम हुआ। आप लोग अगली बार जाएंगे तो फिर से देखना, 2019 में ये बनके तैयार हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। 1944 में 1944 बाबा ने इसके बारे में कहा था, वो तैयार हुआ 2019 ने, और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे टेड साहब को। तो ऐसी ऐसी सुंदर बातें उन्होंने बताई, कुछ यहाँ वहाँ बातें छूट गई होगी, लेकिन अभी समय का तकाजा है। तो हम अभी टेड से कहते हैं, टेड एंड वॉट, कि अभी उनका जो म्यूजिकल प्रोग्राम है वो हमारे सामने पेश करें। आज थोड़ा, मैं जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ी देर हम ज्यादा सेंटर चलाएंगे। Better than me. So how much time?
20 minutes of music and then. Okay, great. I don't know what, we'll see if it works or not. Shall we do the other? Hello? This is one of the songs. See, when I first came to live here, I didn't know very many Baba songs, but I did know a lot of country songs and hymns. So this is a country song that I sing when I first got here called Why Me, Lord? What have I ever done that was worth even one of the things you've given me? And the Mandali would say, that's the question we ask ourselves all the time. Why that? Why? Why me, Lord? What have I ever done that was worth even one of the pleasures that I've known? Help me, Lord. What did I that was worth loving you for the kindness you've shown? Lord, help me, Baba. I'm wasted. It's so. Help me, Baba. I know what I am. Now that I know that I needed you so, help me, Baba. My soul's in your hand. Try me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. And maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Baba, I've wasted it so. Help me, Baba, I know what I am. Now that I know that I needed you so, help me, Baba, my soul's in your hand. Lord, help me, Baba, I've wasted it so, help me, Baba, I know what I am. Now that I know that I needed you so, help me, Baba, my soul's in your hand. Baba, my soul's in your hand. It's a popular song. Sing along on these. This one you probably all know. Sing a song of Mayor Baba. Is that what you got next? I had to start any of it.
I mix it all up, I'm afraid. Okay. Boom, boom, boom. Here we are. Okay, so we'll sing along, guys. Do, capo 3, G up 3. Oh. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Sing a song of May and Baba, sing of the joy his magic touch of love will bring. Sing it loud, sing it bright, for the rest of your life. Never could you sing it long enough to give the praise that he is worthy of. He came to show that every heart could share the bounty of the treasure hidden there. He lit his candles in the dark that we might see. Above the noise he sang his song of silence that we might be free. So sing a song of Meher Baba, sing of the joy his magic touch of love will bring. Sing it loud, sing it bright, for the rest of your life. Never could you sing it long enough to give the praise that he is worthy of. He personally sees to each detail, correcting every error without fail. There is no lesson of the world he does not teach. There is no corner of your heart he will not reach. So sing a song of Meher Baba, sing of the joy his magic touch of love will bring. Sing it loud, sing it bright, for the rest of your life. Never could you sing it long enough to give the praise that he is worthy of. And just to show the depth with which he cares, the bouquet of his close ones he now shares. Those who were there to satisfy his every whim now share their devotion as if flowers of their love for him. And sing songs, make their Papa sing of the joy his magic touch of love will bring. Sing it loud, sing it bright, for the rest of your life. Never could you sing it long enough to give the praise that he is worthy of. In the morning, the birds sing out his praise. In the night, the crickets chatter of his ways. Shall we not shout his name aloud while we have the chance? Meher Baba! Shall we not share with all the world this divine romance?
and sing a song of May and Baba sing of the joy his magic touch of love will bring. Sing it loud, sing it bright for the rest of your life. Never could you sing it long enough to give the praise that he is worthy of. Never could you sing it long enough to give the praise that he is worthy of. All right. Blue Horizon. Okay, doing a table 3C. This is a song that Ward wrote, one of his real beauties. Oh, Mayhair, since you stole my heart and fled across the sea, each thought of you is like a dart of blissful agony. You are more beautiful, Mayhair, than any I've set eyes on. When will I see you coming back across the blue horizon? Without you, desolate am I, and yet my bitter grief is redolent with your memory that brings my heart relief. You are more beautiful, Mayhair, than any I've set eyes on. When will I see you coming back across the blue horizon? Oh, Mayhair, longing is my joy, and ruin is my pleasure. You destroy this found love's perfect treasure. You are more Mayhair than any I set eyes on. When will I see you coming back across the sea? You are more beautiful, Mayhair, than any I set eyes. When will I see you coming back across the blue sky? Mr. Ward, one of his 10,000 wonderful songs. Why don't we cut it short a little here? Let's do. We'll do Who Wears the Dawn Form, and then we'll do Who Slipped on Your Wild, and we'll do Whopper. And that. It's another one Ward wrote. Huh? Huh?
Two more. Okay. So let's do Where's and Walk with a King. Okay. Now please sing along with us. You guys can do this. This is where are we? Up D, right? Who wears the dawn form of the heart's beginning? I call him Mayhem, my friend, my king. Who wears the dawn form of the heart's beginning? I call him Mayhem, my friend and my king. Mayhem Baba, Mayhem Baba. Mayhem Baba, Mayhem Baba, Mayhem Baba, Mayhem Baba, Mayhem Baba, Mayhem Baba. He is the sight that I am longing to see. He is my true self is he. He is the sight that I am longing to see. He is my true self is he. May the mustang of his name, wonderfully sweet, entices me on the way to his feet. The mustang of his name, wonderfully sweet, entices me on the way to his feet. Meher Baba, Meher Baba. Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba. Those who have mingled in the dust at his door to leave his presence desire nevermore. Those who have mingled in the dust at his door to leave his presence desire nevermore. Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba. Meher Baba, Meher Baba. And when the veil is lifted, what will they sing? Glory to Meher, our friend and our king. And when the veil is lifted, what will they sing? Glory to Meher, our friend and our king. Meher Baba, Meher Baba. Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba. The fairest fruit upon the creation tree. He is my true love is he. The fairest fruit upon the creation tree. He is my true love is he. Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba. Meher Baba, 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 Meher Baba. Okay. Okay, for the last one, we'll do Walk with a King. Here we are.
see up to that here. You want to start off? Yeah. In sorrow I wandered, my spirit oppressed, but now I am happy. Securely I rest from morning till evening. Glad carols I sing, and this is the reason I walk with the King. I walk with the King, Meher Baba. I walk with the King, praise his name. No longer I roam, my soul faces home. I walk and I talk with the King. For years in the fetters of sin I was bound. The world could not help me. No comfort I found. But now like the birds and the sunbeams of spring, I'm free and rejoicing. I walk with the King. Everybody sing. I walk with the King, my Baba. I walk with the King, praise his name. No longer I roam, my soul faces home. I walk and I talk with the King. Oh, soul near despair, in the lowlands of strife, look up, Father, up into your light. Joy of his love, you bring me. Come into the sunlight and walk with the King. I walk with the King, Meher Baba. I walk with the King, praise his name. No longer I roam, my soul faces home. I walk and I talk with the King. I walk and I talk with the King. Wonderful, wonderful, wonderful. Please, Tate, please stay there. Both of you, please stay here because we will have small question and answer session. Yeah. Right. Thereafter, we want you to say the Aarti, Australian Aarti. And before that, we will have a small Bhairavi from our side. Okay? Good. आपण आधी अनाउन्स केल्याप्रमाणे जर कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर अवश्य विचारा. माझ्याकडे 2 प्रश्न आहेत ते आधी मी विचारून घेतो. Ted, in your speech, you have said that in 1969, you were stubborn and impatient. Now, after completing 50 years at Mehrabad, what would you say when you look at yourself, as long as these 2 traits are concerned? Are you still stubborn? Are you still impatient? I'm sorry. Yeah. In your speech,
Yeah. You said that in 1969, you were stubborn and impatient. Stubborn. You were stubborn. Stubborn and impatient. Oh, yeah. Well, I still am. Yeah. And now, after 50 years, what would you say? Same. No change. No improvement. Good. Very good. I like that. Uh, did I your haven't improved. parents? I haven't improved at all. All I've done is I am more convinced that Baba is God and what he says is true. Absolutely. That's all. Wonderful. Did your parents uh, did your parents have any inclination towards Baba? Did your parents have any? Well, you know, it's interesting because my father, of course, um, worked very hard and paid a lot to get me educated. And here I wasn't earning any money. That was kind of the hard thing. And he said to me, well, look, this is a charitable trust. They need money. Why aren't you earning money and giving it to the trust? Okay. And so I said to him, and he wasn't a very religious person, but I said, if you had the opportunity to live and work with Jesus's disciples, would you do that? And he said, well, yeah, I think I would. And he said, well, that's it. I believe that Baba was Jesus. So that's why I'm doing it. Yeah. Wonderful. Yeah. And you also, in your talk, mentioned that at Myrtle Beach, at the ping pong table, you had this experience of Baba's living presence as if of his existence. Yeah. Thereafter, any time did you experience that again? Yeah. Oh, yeah. Yeah. I mean, not all the time, but a lot. Wonderful. Yeah. Very good. Yeah. Any other question? Yes, sir. मिस्टर ज्युनियर गाडेकर बोला ना, नाही तसंच बोलायचं. आवाज फेकायचा इकडे. Pilgrim Center. Pilgrim Center. Pilgrim Yeah. Center was the first building. I mean, that's the reason I originally came, was to do that. That was the first one. Yeah. But soon after, all these other buildings started. It's Well, very practical. those toilets were actually designed by this Mahatma Gandhi's um, institution of some kind, the Sopa Sundas, yeah. And I read about them, and that's what we started with, yeah. But Mahatma Gandhi actually was involved with that. So. Wonderful. Anything else? Yes, बोलिए sir. Yes, I mean, It's complimenting you. It's saying it's a great design. oh, thank you. In the MPR, there is this wall where you have all the tiles. Yeah. There's some story behind it, right? You told me once Well- about the number of tiles and how it happened, how it fell. Oh, in that place. was interesting because we just asked people to make tiles. We really had no idea how many we would get. And
I thought we would probably have to do a lot of ordinary tiles to fill it in. This is for the Uh, NPR, right? The Marigold. NPR, the tile room at the NPR. So in order to get people involved to feel they had contributed to the building, we had a lot of things. You may have done it here. Did you do it here at the center? Paint tiles? Yeah. Was there something during that period? No, It didn't happen here. Oh, okay. Should have. I'm sorry about that. Anyway, when they all got collected, some were broken, some were, they didn't work. We never rejected anything in terms of how it looked. Whatever anyone did was accepted. And the total that would fit on this wall was something like 1,565 or something. I don't know exactly. And when they got it all lined up on the floor before putting them up, that was the exact number of tiles we had. Yeah. ये कहानी मैं आपको समझाता हूँ वो क्या कह रहे हैं। एमपीआर में अगर आप गए तो वहां पे एक वॉल है जिसके ऊपर टाइल्स है और उसमें कई लोगों ने बाबा की कुछ मैसेज लिखे हैं, कुछ बाबा की तस्वीर बनाई है। तो इन्होंने कई सेंटर्स को अपील किया था कि आप हमें एक एक टाइल भेजिए और फिर उनको इकट्ठा वो वहां पे लगाना चाहते थे। अब उनके दिमाग में ये था कि कितनी आएगी, कितनी हमको बाजू में रखनी पड़ेगी या कितनी कम पड़ेगी, वहां पे दूसरा कुछ लगाना पड़ेगा। पूना सेंटर से कोई टाइल नहीं भेजी गई थी, मैंने उनको अभी क्लैरिफाई किया। तो वो जो पूरी वॉल थी उसके लिए 1565 टाइल्स की जरूरत थी और इनको जो टाइल्स मिली उसमें से कुछ टूटी, लेकिन जो इंटैक्ट थी, मतलब जो लगा सकते थे, उनका नंबर बिल्कुल 1565 था। बाबा ने सभी प्रेमियों के प्रेम को अभिवादन किया है। This is Baba's acknowledgement of their love. Yeah. Wonderful. और कोई सवाल है? हाँ। My hearing is not good. When did you start really believing that Baba was Jesus? Was it after the Myrtle Beach incident or The ping pong incident, really speaking, yeah. from the ping pong table? Yeah. Last question. Song. Okay. Any of the songs that was favorite of any of the mandali that you were asked to sing? Well, Walk with the King. Walk with the King. Yeah. Which mandali? All the mandali or? Well, it was Go Hair's fair. Okay. But honestly, they all like that. But one other thing, both Pendu and Mansari said when I die, when Mansari or Pendu die, please sing Nearer My God to Thee. Okay. So. And did you sing it? Oh, of course. Wonderful. Good. और कुछ एक शेवट सा बोला गाड़ी साहेब बोला संडा सोडून काही बोला Okay. Well, trees on the hill, trees on the pathway were planted by the Walu. Mandali. By Padri. No, well, the ones that were missing, we filled them in, but the women Mandali planted those and washed and watered them with their bath water. Yes, yes. So plantation was not done by him. The second question is that are there any
other architects who come and study our buildings. Who come and study? Yeah, the Ahmednagar Architects Association comes Oh, every year. good. And there Right. are students here. They've got a school. Yeah, it's fun. Yeah. Anybody is going to give vote of thanks, or should we just say vote of thanks? We will now give vote of thanks as a formality, and then Oh, we will have one Bhairavi, which is the concluding song, and then you will sing the Aarti. okay, great. Yeah. जय बाबा. आजच्या कार्यक्रमाला आपल्याला लाभले जे आहेत अतिथी टेड आणि वॉट्स यांनी फार सुंदर प्रकारे कार्यक्रम आजचा केला. तसंच कासार काका आणि डॉक्टर वासुदेव हे जे इथं आले त्या सर्वांचा मी अत्यंत आभारी आहे. आमच्या सर्व ट्रस्टींकडून आज या कार्यक्रमासाठी ज्या व्हॉलेंटियर्सनी हे सगळं डेकोरेशन वगैरे केलेलं आहे त्यांचा पण मी अत्यंत आभारी आहे. मेनली जी रांगोळी काढलेली आहे श्वेता, त्यासाठी कृपया लोकांनी जरा टाळ्या वाजून तिचं स्वागत करावं. कुठलाही कार्यक्रम असू दे, एक मिनिट श्वेता उभी राहा, लोकांना बघायचं श्वेता कोण आहे. श्वेताबरोबर अजूनही बरेच व्हॉलेंटियर्स आहेत. तर सगळ्यांना मी काय उभं करू शकणार नाही, तर त्यांची थोडीशी नावं सांगतो. वैशाली, माधवी आहे, अपर्णा आहे, बाकीचे सरिता वहिनी आहेत, नंतर श्रुती, प्रीती आहे, निलेश पण सेंटरमध्ये जो भरपूर कामाला मदत करत असतो. आता कोणाची नावं चुकून राहू शकतात, तर मी मीनाक्षी डोंगरे, तर सगळ्यांचा मी अत्यंत आभारी आहे. आणि आपल्या प्रत्येक कार्यक्रमाला त्यांची अशीच नेहमी साथ असते आपल्याला, आणि यापुढेही आज राहील अशी मी आशा करतो. तर असं सुंदर डेकोरेशन केलं आणि हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडला, त्यासाठी मी त्यांचं अभिनंदन करतो. त्यानंतर डेकोरेशनची जबाबदारी, नंतर माईकची जबाबदारी अभिजित सांभाळतो. आज नमन आलेला आहे इकडे, त्यांनी आज फोटोग्राफी आणि बाकीची जबाबदारी सांभाळली, त्यांचं पण मी आभारी आहे. बाकीच्या कार्यक्रमाचं निवेदन आणि बाकीच्या गोष्टी प्रशांत यांनी केलेल्या आहेत, त्यांचा पण मी आभारी आहे. तसंच प्रोग्राम कमिटी ज्यांनी हा प्रोग्राम सगळा चार्ट आउट करून व्यवस्थित पार पाडला, त्यांचाही सुद्धा मी आभारी आहे. आणि असंच बहुसंख्येने लोकांनी यावं आणि बाबांच्या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. जय बाबा. हे ठरवलंय फक्त. Seems to get the baby. Got it. Gonna finish by 9. Huh? Must have to finish by 9. I don't know. I wonder if we should be down here. Are they doing RT now? The Arctic, Australian, and sea. Yes. तिमिरा मधुनी मार्ग दावितो सन्मार्गाते सकला नेतो
तोची देव जाणावा. प्रभु प्रेमाचे बीज रुजवितो, विश्वबंधुता जगी स्थापितो. तोची देव जाणावा. दुःख दुराशा दैन्य वारितो, सुख शांती चैतन्य आणितो. तोची देव जाणावा. कलियुगाच्या कोलाहली जो आत्मजागृती मौनपणे जो करीतो. तोची देव जाणावा. दास प्रताप सांगे सुजना, कलियुगी प्रभु मेहर जाना. कलियुगी प्रभु मेहर जाना. संशय मनी न आणावा. मन लागो तुझ्या कीर्तनी, हो मन लागो तुझ्या कीर्तनी. हो मन लागो तुझ्या कीर्तनी. देह लागो तुझे कारणी, हो देह लागो तुझे कारणी. मन लागो तुझ्या कीर्तनी, हो मन लागो तुझ्या कीर्तनी. असुनी जवळी नच ओळखीला, असुनी जवळी नच ओळखीला. अल्पमतीला नच आकळीला, अल्पमतीला नच आकळीला. परिनच भावी आता तरीही, परिनच भावी आता तरीही. वंचना जीवनी, हो वंचना जीवनी. मन लागो तुझ्या कीर्तनी, हो मन लागो तुझ्या कीर्तनी. देह लागो तुझे कारणी, देह लागो तुझे कारणी. मन लागो तुझ्या कीर्तनी, हो मन लागो तुझ्या कीर्तनी. कधी प्रकटतील तारका परी, पौनवाणीचे बोल अंतरी. कधी प्रकटतील तारका परी, मौनवाणीचे बोल अंतरी. मौनवाणीचे बोल अंतरी. दास प्रतापा हीच प्रतीक्षा, दास प्रतापा हीच प्रतीक्षा. आता या जीवनी, हो आता या जीवनी. मन लागो तुझ्या कीर्तनी, हो मन लागो तुझ्या कीर्तनी. देह लागो तुझे कारणी, देह लागो
तुझे कारणी मन लागो तुझा कीर्तनी हो मन लागो तुझा कीर्तनी हो मन लागो तुझा मेहेर मेहेर जय जय मेहेर 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 मेहेर जय जय मेहेर लिए अपने पास तो बाबा के पास अभी चले गए हैं हमारे वास्कर काका, जिनको हम सब लोग जानते हैं। गुरु प्रसाद में हम उनसे मिलते रहे हैं, आज हमारे बीच नहीं है, बाबा के पास चले गए हैं। हम मेहर बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आगे की जो भी यात्रा है उस पर मेहर बाबा की नजर रहे। उनकी याद में मेहर बाबा का स्मरण करते हुए हम आधा मिनट मौन रखेंगे। दिस इज फॉर मिस्टर वास्कर, the Guru Prasad man who departed yesterday to be with Baba. Half a minute silence. Vaskar, he's gone. Uh-huh. तार मेहर बाबा की जय। अभी हम टेड और वॉर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऑस्ट्रेलियन आरती गाए। उसके बाद में सारा हमारे सामने प्रार्थना करेगी और हम फिर बाहर प्रसाद का आनंद लेंगे। जय बाबा। O glorious, eternal, ancient one, your face is a bright, transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart may have I give to you to keep.
Creator, yet creationless you are. Truth and truth's body, divine avatar. Who through compassion the three worlds maintains. Destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath of the world wheel that bears me unto death. Unless you are infinitely kind, break the wheels of which is conditioned mind. Ah, myself I sing to you in praise, and beg your love to bear me through the days, till you, the ever-living perfect one, illume my darkness with your shining sun.